Hey guys, welcome back to another video, and today we are testing Velvet Oud by Lattafa. जैसा कि इसका नाम है, it is very velvety. इसका बॉक्स नहीं है मेरे पास because इसके ऊपर एक और बॉक्स आता है. I have kept this because I really like the feel of this because it's very premium in looks, not just performance, in looks as well. So if you want to smell expensive, let's test this out. क्या ये एक्सपेंसिव स्मेल करता है? क्या ये एक एक्सपेंसिव ऊद है? एंड टुडे वी विल टेस्ट दिस परफ्यूम very in very details. So this is how it looks. So the bottle is very beautiful. इसके अंदर ही ऐसे स्टैंड है and you can see the engraving of Velvet Oud like this. I'll keep it somewhere. I'll pull the bottle out. So this is how the bottle looks. बहुत सुंदर बॉटल है. जब मैं इसको लेने गया था तो मुझे बॉटल देखते ही पसंद आ गई थी बिकॉज ये पूरा क्रिस्टल का है. इट्स कम्प्लीटली क्रिस्टल मेड ऑफ ग्लास. दिस इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड इट्स हैवी. कोई मैग्नेटिक कैप नहीं है बट यस, दिस इज़ द बॉटल एंड दिस इज़ द जूस. सो आई हैव बॉट दिस अराउंड 1.5 years ago and I really love this perfume. So let's spray and find it out if it is for you or not. Wow. The atomizer is good. If I have to rate this out of 10, I'll give 7.5 out of 10 because atomizer काफ़ी अच्छा है. Nice. बहुत दूर तक स्प्रेयर जा रहा है and जो वेपर्स हैं वो बहुत scattered है. So Velvet Oud is one of the Lattafa's best seller. Not today but काफ़ी टाइम पहले से ये परफ्यूम आ रहा है and on users rating it's around 4.1 on Fragrantica and this has been a good perfume. So when I spray, this comes with a very rich oud and very leathery touch. बहुत एक प्रीमियम लेदर का इसमें बेस लेयर है. ऑन द फर्स्ट बर्स्ट आपको ऐसा लगेगा दैट यू हैव स्मेल्ड समथिंग मेजेस्टिक. सो इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ही स्मूथ है, नॉट लाइक अल्कोहल ब्लास्ट. एंड जैसे ही आप इसको स्प्रे करोगे यू विल फील अ प्लश ऑफ लेदर एंड वेलवेटी ऊद. सो आफ्टर द इनिशियल स्प्रेज, लेट्स से आफ्टर 1 or 2 hours, व्हेन इट सेटल्स, व्हेन इट ड्राई डाउन होने के बाद ये आपको एक बहुत ही क्रीमी बेस देगा और जिसमें सॉफ्ट स्पाइसेस का नोट होगा. यू विल रियलाइज दैट सॉफ्ट स्पाइसेस आफ्टर settlement of 1.5 or 2 hours. The dry down becomes more warmer and it doesn't says that I am oud. The oud is very light, very light. So there are a lot of people who don't like oud at all. I'm not one of them, but I have talked to people about fragrances and वो कहते हैं यार हमें oud इतना पसंद नहीं है because oud generally is a very loud fragrance. But this one is very light. This one is lighter with a base layer of cream. And if I talk about the longevity of this perfume on my skin is, let's say, around 4 hours, honestly. And if I say the longevity on my clothes, so it is around 6 to 8 hours because it projects heavily and it does not settles down very quickly. तो काफ़ी देर तक आपके कपड़ों पे रहता है, काफ़ी देर तक आपकी स्किन पे रहता है. At this price point ये जस्टिफाई करता है अपनी कॉस्ट को बिकॉज 4 से 8 घंटे किसी परफ्यूम का प्रोजेक्शन. एंड आई बॉट इट दिस अराउंड 1500 अगेन. सो 1500 में ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम निकल के आता है. एंड I don't know what is the current price of this perfume, but if you get this around 1500, it's a good buy, very good buy. Just make sure the seller is authentic. And when I say, if I compare this to the OG Ouds, this is less harmful, I mean, to your pocket, and this is very less oody. ये उतना oud नहीं है जितना आप समझ रहे हो because oud are very complex fragrances. This is very simple, very simple. Because this aims for luxury vibe without that oud price tag, because oud fragrances generally are around 3 to 4,000 if I talk about UAE clones. And if you go for Tom Ford ouds, they are very expensive, way more expensive, more than 20,000.
and that will definitely hurt your pocket. If I talk about the pros of this perfume, this is affordable, this is velvety, wearable oud, good early projection, easy to find online, offline availability. It's has a brand name that is Lattafa, and if you are new to ouds, you should definitely give it a try because it is a very light oud and you will get to know what actual oud smells like. Now let's come to who should buy it. If you are someone who like oud, as I mentioned, who are new to oud, should definitely buy this for cooler evenings, for cool weather. And if you are someone who like very detailed ouds, like raw ouds, and when I say medicinal ouds means बहुत ही depth में जो oud होते हैं, oud fragrances. I'll talk about oud fragrances later when I go deeper in the perfumes. Let's come to the verdict. The verdict is Velvet Oud is a very nice play because considering the price point, ये बहुत ही एक अच्छा परफ्यूम है और जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ये अपनी कीमत अदा करता है. एंड I'll rate 3.8 out of 5 because I have used this myself on special occasions. मैंने इसको शादियों में लगाया है, मैंने इसको घर में जब पूजा होती है, खासकर हवन होता है, मैंने इसको बहुत यूज़ किया है. एंड आई हैव अट्रैक्टेड पीपल बिकॉज इंडिया में कॉम्प्लीमेंट्स मिलना बहुत रेयर है. सो डोंट एक्सपेक्ट भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स लाइक क्लब द न्यू इंटेंस और Dior Sauvage or Bleu de Chanel or LV Imagination. I'll give it 4 because it delivers a very plush experience without breaking your bank. When I say plush, because it introduces you with the oud fragrance without breaking your bank, and it is a very light, very beautiful oud fragrance. Just give it a try.